Dear viewers, welcome to the second part of our previous video related to interpersonal skills of communication. This topic is very important when it comes to many exams like JKPSI and many other SSRB exams. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना सेकंड पार्ट इंटरपर्सनल स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन का. एज फार एज द प्रीवियस पार्ट वाज कंसर्न्ड और द फर्स्ट पार्ट इज़ कंसर्न्ड, इसमें हमने डिस्कस किया था इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का मीनिंग, उसकी इम्पोर्टेंस एंड द यूज़ ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स. एंड नाउ इन दिस पार्ट हम डिस्कस करेंगे वेरियस इंटरपर्सनल स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन जो हम यूज़ कर सकते हैं while our communication process, or we can inculcate these communication skills in order to make our communication better and effective. And the most important skill of interpersonal communication is verbal communication. The verbal skill of communication deals with the choice of words. It involves how and what words are used during communication. It also involves the correct and proper use of tone and manner. I mean to say, अगर आपको गुस्सा है, if you are angry, तो आपका गुस्सा रिफ्लेक्ट करना चाहिए आपके वर्ड्स में भी, आपके फेस से लगना चाहिए कि आपको गुस्सा है. If you are supposed to make your communication better, your happiness should be reflected from your face, from your impressions. लगना चाहिए कि आप खुश हैं, आपके इम्प्रेशन से लगना चाहिए आप खुश हैं, आपके बिहेवियर से लगना चाहिए आप खुश हैं. तो दिस इन्वॉल्व्स द वर्बल कम्युनिकेशन. जब आपके वट एवर यू से दैट शुड बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम योर बॉडी लैंग्वेज, एंड दिस इज़ वर्बल कम्युनिकेशन. द नेक्स्ट स्किल ऑफ कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड फेशियल एक्सप्रेशंस, tone, gestures, movements, body language and confidence. Whenever you say something, हम उस टाइम में अपना बॉडी लैंग्वेज भी दिखाते हैं, अपना कॉन्फिडेंस शो करते हैं, अपनी मूवमेंट्स शो करते हैं, हाथ हिलाते हैं, हम किसी की तरफ देखते हैं, अपनी नॉडिंग करते हैं, सर हिलाते हैं. आई मीन समवेयर हम जो बात बोलते हैं वो अपने इशारों से भी बता देते हैं. एंड समवेयर कभी कभी कहीं पे हम जो आंसर्स देते हैं, हम जो रेस्पॉन्स देते हैं और हम जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो हमारे मूवमेंट्स से, गेस्चर से ही हो जाता है और हमारी बॉडी लैंग्वेज से ही हो जाता है. जैसे अगर हमें पूछे आपने खाना खाया, तो हम अपना सर हिला के ही बोल देते हैं कि हाँ खाया या हमने नहीं खाया. इफ़ योर वर्ड्स आर फ्यूरियस, एंगर शुड बी रियली विजिबल ऑन योर फेस. इफ़ यू आर टॉकिंग इन अ हैप्पी एनवायरनमेंट, you should reflect happiness in your body language on your face. In precise short में मैं आपको बता दूं, whatever is said should be displayed in non-verbal modes as well. ये जो हमारे non-verbal skills of communication help करते हैं regulation of flow of communication में. These help in the modification of the said words. उनको modify करने में, उनको more accurate करने में हमें help करते हैं. And these reflect the state of mind, I mean mental or emotional state of mind भी रिफ्लेक्ट करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. ये हमारा कॉन्फिडेंस शो करते हैं. सो हमारे जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, इनका क्लोजली रिलेशन है विद वर्बल कम्युनिकेशन, बिकॉज हम बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हम कहते हैं और हमारी बॉडी लैंग्वेज से रिफ्लेक्ट भी करते हैं. द नेक्स्ट और द थर्ड स्किल ऑफ कम्युनिकेशन दैट is coming under discussion is listening skills. These refer to the ability to listen attentively and respond quickly. जब तक हमें कोई चीज़ समझ ना आए तब तक हम उसका response नहीं दे सकते. And we should keep in mind, listening is different from hearing, as listening demands attention and concentration, whereas hearing includes all the sounds that reach to our ears. अगर कहीं पे कोई धमाका होता है, कोई नॉर्मल सी आवाज़ आती है, कोई रैंडम आवाज़ आती है, तो हम वो सब सुन लेते हैं. दैट कम्स अंडर हेयरिंग. बट व्हेन वी लिसन समथिंग फॉर कंप्रहेंशन, जब हमें कुछ मीनिंग के लिए कोई चीज़ सुननी होती है या सुनते हैं, जब हम कोई न्यूज़ सुनते हैं, हम पूरा ध्यान दे के सुनते हैं, तो दैट मीन्स लिसनिंग. लिसनिंग इज़ फॉर कंप्रहेंशन.
in short. And so when listening is for concentration, listening is for attention, it has its own principles which are to be followed while performing these skills, and which are: stop talking when somebody is speaking. A saying says, एक कहावत है, talking while speaking is the mockery with the speaker. So whenever somebody is saying something, we should give our complete concentration and attention towards him. So stop talking is the first important principle of listening. Be prepared to listen attentively is one more important principle of listening. कोई चीज़ सुनने के लिए पहले हमें अपने आप को मेंटली भी ही प्रिपेयर करना है, अदरवाइज़ एक धमाके की तरह हमें किसी का लेक्चर भी हमारे सर के ऊपर से गुजर जाएगा. वी शुड बी मेंटली फिजिकली प्रिपेयर टू लिसन टू समबॉडी, टू सम speech, to some words attentively and concentratively. If we are a good listener, we should make the speaker feel at ease. One more quotation says, it takes courage to stand up and speak. It also takes courage to sit down and listen. And here we should be brave enough to take our seat and make the speaker feel at ease and listen to him attentively. There should be no distraction while listening. We should first remove all the distractions, all the disturbing sounds जो हमें disturb करती हैं while listening, so that we can listen attentively for comprehension purposes. While listening, we should listen for ideas, we should listen for comprehension, not just words. And we should listen with patience. As already said, it needs courage to stand up and speak. It also needs courage to sit down and speak. It also needs courage to sit down and listen. These are some important principles of listening. अगर हमें अच्छे से सुनना है तो these principles should be followed while listening. The next important skill of interpersonal communication is reinforcement. The use of positive communication, encouraging words alongside non-verbal communication gestures such as head nods, smiles, facial expressions, and eye contact is important to reinforce openness in others. Taking others' perspectives, ideas, and suggestions make way for good relationship. Even though हमें अपना डिसीजन देना है, but others' perspective, others' ideas, and others' suggestions should be taken. अगर हमें एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना है तो भले ही बेशक आप अपना डिसीजन दें, you should give due preference to take others' perspectives and ideas. The next important skill of interpersonal communication is negotiation. Negotiation means the ability to discuss and reach an agreement in a professional way. It means अगर आप कोई चीज़ खरीद या बेच रहे हैं तो आपका रेट डिफरेंट होगा एंड द रेट ऑफ अदर पार्टी विल बी डिफरेंट. इफ़ यू आर कैपेबल एनफ, you should negotiate the price of that item, and if you are good at negotiation, you will definitely come to an agreement by a professional way. और आप उसका एक बीच वाला रास्ता निकालेंगे जिससे ना तो आपको लगे कि दिस इज़ टू मच कॉस्टली और ना सामने वाले को लगेगा कि ही इज़ एट लॉस. द नेक्स्ट स्किल इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग. This skill or ability helps in finding a solution to a problem after considerable thought and taking all the parties into confidence. It means if you are solving a problem or if you are dealing with a situation where two parties are involved, आप वहाँ पे कोशिश करेंगे कि दोनों पार्टीज़ को कॉन्फिडेंस में लेके फिर एक डिसीजन लेंगे आप जिससे प्रॉब्लम सॉल्व होगी. This also helps in taking decisions and making others accept those decisions. जब आप सभी पार्टीज़ को कॉन्फिडेंस में लेंगे तभी आपका डिसीजन एक्सेप्टेबल भी होगा, और आपका डिसीजन जब एक्सेप्टेबल होगा तो तभी प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी. And the last and the important skill of interpersonal communication that I am going to discuss in this video is empathy. Empathy means
अंडरस्टैंडिंग द थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशनल स्टेट ऑफ अनदर पर्सन। ये स्किल हमें हेल्प करता है दूसरे आदमी का, दूसरे पर्सन का पर्सपेक्टिव समझने में, और उसके बाद एक रास्ता मिलता है हमें एक गुड डिसीजन, एक सक्सेसफुल डिसीजन लेने का। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट skill of interpersonal communication, as we should be good enough to understand the other's perspective. We should be good enough to understand others' problems and his advices, his suggestions. In order to conclude this topic and in order to become successful, we need to inculcate these skills in our communication process and enrich our interpersonal communication with respect and effectiveness. Thank you for being with us, but don't forget to like, share and subscribe this channel, please.